Hello student, welcome to Shivaji Group of Institution online classes. Student, today we will discuss exercise number 6.2 from chapter 6. So firstly we will start with filling the blanks. So the first statement is the maximum displacement of a vibrating body from its mean position is called its amplitude. इसमें क्या फिल करेंगे? एम्पलीट्यूड. ठीक है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है उसको क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड. नाउ द सेकंड स्टेटमेंट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज and which is denoted by the symbol HZ, capital H and small letter का Z. Now third statement is dolphin क्या कौन सी waves को use करती है? Ultrasonic waves. So the correct option is ultrasonic sounds or wave. ठीक है, dolphins use ultrasonic sound to locate their prey. Now fourth statement, the bouncing of sound energy on striking a hard surface in the same medium. मतलब किसी भी hard surface पर strike होती है sound energy and same medium में reflect हो जाती है, back हो जाती है. ठीक है, in the same medium is called reflection of sound. इसको क्या कहते हैं? Reflection of sound. Now fifth point is sonar is used to determine the depth of. क्या फाइंड करने के लिए यूज करते हैं? डेप्थ. ठीक है, डेप्थ ऑफ ओशियन. Now student, start with the correct statement. So the first statement is the number of vibration of a vibrating body in 1 second is called its time period. No, this statement is incorrect because time period नहीं होके क्या यहाँ पे राइट करोगे? फ्रीक्वेंसी. So the correct statement will be the number of vibration of a vibrating body in 1 second is called its frequency. Okay, तो क्या राइट करना है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी. इसको टाइम पीरियड को आपको क्या कर देना है? यहाँ से कट कर देना है. And second statement, the sound of frequency is less than about 20 hertz is called sonic sound. इस तरह सोनिक साउंड नहीं होती है 20 हर्ट्ज से जो लेस देन फ्रीक्वेंसी होती है इसको क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक. सो आपको ये कट करके क्या राइट करना है यहाँ पर? इंफ्रासोनिक और यू कैन से सबसोनिक. सबसोनिक साउंड मतलब 20 हर्ट्ज से जो लेस देन फ्रीक्वेंसी होती है उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक और सबसोनिक. एंड 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से जो अबव फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक. एंड 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के जो बीच की फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी. ओके, और सोनिक फ्रीक्वेंसी. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज reflection of sound takes place only from material of loose texture. No, this statement is incorrect because reflection of sound takes place only from material of hard surface or polished surface. So you can write here hard surface or polished surface. So the correct statement will be reflection of sound takes place only from material of hard surface or polished surface. आपको loose texture जो है यहाँ से कट करना है. Now student, fourth statement is the repetition of the sound which is reflected from high building is called multiple vibration. No, this statement is incorrect because the repetition of the sound which is reflected from a high building is called an echo. So आपको क्या राइट करना है यहाँ पर? An echo. Okay. Now fifth statement is pitch is the effect produced in the ear due to the sound of some particular amplitude. No, this statement is incorrect because
pitch is the effect produced in the ear due to the sound of some particular frequency. pitch किस पर डिपेंड करती है? frequency पर. so आपको क्या राइट करना है यहाँ पर? frequency. now students start with true or false. so the first statement is ultrasonic waves is used for homogeneous milk. Student, this statement is true. Now second statement is the sensation of any sound persists for 1/20 second in our ear. Student, this statement is false because the sensation of any sound persists for 1/10 second in our ear. So this statement is false. Now third statement is loudness distinguishes a feeble sound from a loud sound of the some frequency. Student, this statement is true. Now fourth statement, pitch of the sound produced is determined by the wave nature of the vibrating body. This statement is also false because pitch of the sound produced is determined by the frequency of the vibrating body. pitch किस पे डिपेंड करती है? क्या डिटरमाइन करती है? frequency. so this statement is false. now fifth statement, the quality of sound is produced due to change in wave form. मतलब quality of sound क्या produce करती है? change in wave form. so student, this statement is true. Now student, pick the correct option. First statement is the time taken by a vibrating body to complete one vibration is called, क्या होता है इसको? क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. मतलब टाइम टेकन वन वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम टेकन होता है इसको क्या कहते हैं? टाइम पीरियड. एंड विच इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल T. एंड द यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड. okay, now second statement is the frequency of infrasonic wave is less than 20 hertz. frequency infrasonic waves की frequency कितनी होती है? less than 20 hertz. now third statement is loudness of sound depends on its amplitude. loudness किस पर डिपेंड करती है? amplitude पे. and the relation between loudness and amplitude, loudness is directly proportional to the square of amplitude. now fourth statement is pitch is the effect produced in the ear due to sound some particular frequency. ये किस पर डिपेंड करती है? some particular frequency. so the correct option is B. now fifth point is a pure sound of single frequency is called tone. pure sound of single frequency हम लोग क्या कहते हैं? tone. now student, match the correct statement. so the first statement is time taken to complete one vibration is called time period. so the correct option is E, which is time period. now second statement, the effect produced in the ear due to sound of some particular frequency. some particular frequency, the correct option is D, which is pitch. now third statement, the bouncing of sound from hard surface is called reflection of sound. क्या इसको कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी. नाउ फोर्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय अ बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. 1 सेकेंड में जितने वाइब्रेशन होते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इसको क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी. नाउ फिफ्थ पॉइंट इज द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज मोर देन 20,000 हर्ट्ज. मोर देन 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड, कौन सी साउंड होती है? अल्ट्रासाउंड. Okay student, so the correct option is A, which is ultrasound. So student, today's class is over. Thank you.